Hello everyone, I am Anuja Sharvastav and today I am going to teach you about the another separation techniques in class 7. So first separation technique which I am going to teach you, that is related with the previous video. In previous video I told you about the distillation and in this distillation process I told you that this is the separation method by which solid particles are separated from the liquid by heating them, first forming liquid into the vapor state and then after the vapor is condensed and again forming the liquid state, so that in the process of distillation the liquid can be obtained again. So this is the laboratory setup for the distillation process. This type of setup is required for the process of distillation. Look at here, this flask is known as the round bottom flask. This round bottom flask is just placed on the tripod stand. एक stand होता है, उसके ऊपर इसको place कर देते हैं and it is tied with a holder so that the thermometer is put here. Now here Bunsen burner is there which is going to heat it, and inside this round bottom flask impure liquid is there. Now why we are using this round bottom flask? It is also known as distillation flask. It is the distillation flask. Why it is distillation flask? Because it provides the equal heating and it also prevent it by broken. मतलब ये जल्दी टूटते नहीं है. Now here one tube is attached. This tube is known as the condenser tube. और condenser tube का मतलब क्या होता है? This is the tube by in which continuous flow of water is there to cool the liquid, ताकि वो वेपर क्या हो, कूल डाउन होता है. इसके अंदर कंटिन्यूसली फ्लोइंग ऑफ वाटर होता है. नाउ अब क्या होता है इसमें, द इम्प्योर लिक्विड इज देयर, मिक्सचर इज देयर, व्हेन इट इज गोइंग टू हीट अप, जैसे ये हीट अप होता है द वेपर इज फॉर्म, दिस इज द वेपर इज फॉर्म. ओके, नाउ दिस वेपर इज गोइंग टू दिस कंडेंसर ट्यूब and leaving behind the solid in this distillation flask. Now the condenser which is now going to take the vapor. Here the warm water is out and it is going to provide the cold water. Cold water की वजह से क्या होगा, the vapor is going to condense, vapor condense होंगी and the liquid is going to obtain in the receiving flask which is also known as the conical flask. This is the receiving flask. In this receiving flask the liquid is going to collect again. That means this is the complete setup for the process of the distillation. This flask in which the mixture is heated, the vapor which is coming to the condenser, in condenser completely the vapor is going to cool down and the pure liquid is obtained in the conical flask which is also known as the receiving flask. So this type of complete process of distillation takes place inside the laboratory. Now next move towards the another process, that is the crystallization. The another process is the crystallization. So crystallization process, it is related with the crystal. So what is the crystal? A crystal is a solid having well defined geometrical structure of certain compound. Now in crystallization mixture, what is going here, it is a process when solution containing the soluble solid, solution containing soluble solute or solid, you can say both. जिस solution के अंदर soluble solid होंगे, it allows to heat slowly.
स्लोली हीट अलाउ करेंगे ताकि ये इवेपोरेट होने लगे, जो सोल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट इवेपोरेट होने लगे. तो वंस अ कंडीशन विल बी देयर व्हेन दिस ऑन हीटिंग इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड. दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूबल सॉल्ट है उसको हम इवेपोरेट होने के लिए स्लोली हीट करेंगे. तो वन टाइम अ कंडीशन इज देयर दैट इट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड? दैट इज नो मोर सॉल्यूट इज गोइंग टू डिजॉल्व इन इट. दैट मीन्स अब इसके अंदर कोई भी अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा. नाउ आफ्टर देन दिस प्रोसेस टेक्स, सो ऑन कूलिंग जब इसको ठंडा करेंगे सो दैट द क्रिस्टल्स आर गोइंग टू फॉर्म एंड स्लोली स्लोली द क्रिस्टल बिकम्स द बिगर. क्रिस्टल बिगर हो जाएंगे और दिस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज देयर. और देन आफ्टर जो लिक्विड बचेगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे. दैट लिक्विड इज नोन एज द मदर लिक्वर. That liquid is known as mother liquor, and this crystallization process it is utilized for the forming of the cubes of sugar and salt. That means the sugar and salt के जो cubes होते हैं उनके लिए हम utilize करते हैं. Next process is the centrifugation. What is centrifugation? It is just like you are observing at your home when your mother is separating butter from the cream. That type of process is there. This process, the method is of separating finally suspended solid component in liquid by spinning the mixture in a closed box or in a closed container at very high speed. That means क्या होता है कि in this method the mixture is going to keep in a container. That container is known as centrifugal machine और centrifugal box. उसमें इसको बहुत तेज़ी से रोटेट, स्पिन करने का मतलब है रोटेट कराते हैं. जब इसको रोटेट कराते हैं सो व्हाट हैपेंड हियर वन प्रिंसिपल वर्क. दैट मीन्स व्हाट इज द प्रिंसिपल? द हैवी पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं दैट फील्स द मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फील करते हैं. सो दैट द सस्पेंडेड पार्टिकल इज सेटल डाउन एट द बेस. जिससे सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं? बेस पर सेटल हो जाते हैं और ऊपर से सुपरनेटेंट को हम क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं. सो दिस सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग द बटर फ्रॉम द क्रीम. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग द ब्लड. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ब्लड सेल्स वो ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स जो हम ब्लड की सेल्स देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वी आर गोइंग टू जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स इन द लेबोरेटरी. सो दैट इट इज़ द process in which the spinning method, the rotation method will be there. So this is all about the today's topic. So watch the video till then. Bye bye. Thank you.